Hello, everyone. Good evening. Good evening. Hello, good evening. Thank you for joining. Thank you for joining. So, we are going live from Facebook and Instagram together. So, thank you everyone for joining in. So, let's wait for just a few more minutes for everyone to join in and then we'll start. Thank you everyone for joining. Instagram, many people are joining in. So, I think it's 7-4. Sorry, 5-4. So, we will start at 5-5. Just wait for another minute. Let's see who joins in. And the topic for the today's live is the secret to motivating your children. Hi Sakshi, thank you for joining. How are you? Right, so I think it's 5-5. Let's start the live. So good evening everyone and good evening everyone and thank you so much for joining in. So the live for today, the topic for today's live is the secret to motivating your children. So, what are the secrets which we can motivate our children? Motivate our children to do better work. Motivate our children to pull away from YouTube or Netflix or their phones, TV. Motivate your children to study well. Motivate your children to eat well. Motivate your children to behave good socially. So the list is endless. बहुत सारे reason है that why we parents want to motivate our children to do something better. And most of the times, as you know, many of the parents would agree with me that we fail. हम बच्चों पे बोलते रहते हैं, we just keep on shouting at the children, कि do this, do that, you should study now, you should go for your extracurricular activities or behave well, behave well with elders. But many a times it happens that whatever we are saying, it falls on deaf ears. So children do not
get motivated very easily to do work which requires a lot of effort. So how can we motivate the children to do something which which is good for them or which we want them to do? So basically सारे parents दो methods use करते हैं. One is and these methods are like age old traditional parenting से जो methods आते हैं. And one is the fear, installing fear in them, or punishment. कि do this, study well or you will fail in your exams. If you do not behave well with your sibling, you will get a punishment. Or if you do not do anything, whatever you are telling them to say, so these are the consequences you will face. So we all tell the children that ये काम कर लो नहीं तो ये punishment मिलेगी. Do this or this will happen. You will fail in class. You will probably not be if you don't eat well, you will not have a good health. So we instill fear in the children. So or the second thing is we the second is that we bribe the children, that you do something and then I will give you an extra treat. Probably if you study more, then you can get some more time for your Instagram. If you behave well socially, then probably I will take you to a treat for a pizza. So हम दो तरीके यूज करते हैं. या तो fear, we put fear in our children, or the second is we give them bribe. But ये there are so many different kinds of children. As सबने पढ़ा होगा, there are many different personalities of children. So कुछ children dominating होते हैं, कुछ children they are very social. Some children are very docile and they are very quiet. Some children are very analytical. So there are different traits, personality traits in children. और हम हर एक trait के साथ ये एक ही formula fear का या bribe का fit नहीं कर सकते. If we do that, it is bound to fail at some point or the other. So for example, hi Jyoti, thank you for joining in. So for example, Sonia is saying हिंदी और पंजाबी. Okay Sonia, मैं हिंदी में बात कर सकती हूँ. It will be mixed. It will be mixed Hindi and Punjabi both, right? Sorry, Hindi and English both. So पूरा हिंदी में बोलना मुश्किल होगा, but हिंदी और पंजाबी में मैं बोलती हूँ. Sorry, हिंदी और इंग्लिश में मैं बोलती हूँ. So yes, so मैं कह रही थी कि it is very difficult कि हम बच्चे को, इतने सारे बच्चों के डिफरेंट ट्रेड्स हैं और उन पे हम सिर्फ यही एक फॉर्मूला लगाएं, या तो फियर का या फिर ब्राइब करने का. सो फॉर एग्जाम्पल कि जैसे आपका ये हाथ है, सो यू हैव डिफरेंट फिंगर्स ऑन योर हैंड. डिफरेंट एक आपका अपना ही हाथ है, एंड ऑल द फिंगर्स इन योर हैंड्स दे आर शेप्ड डिफरेंटली. तो अगर अब आपको इसमें ग्लव डालना है इस हाथ के अंदर, सो वो हाथ ग्लव के लिए अलग अलग हर फिंगर की अलग शेप होनी चाहिए. अगर वो एक ही शेप ग्लव में सारी शेप्स की एक ही सारी फिंगर्स एक ही शेप की होगी, तो आपके लिए बहुत मुश्किल होगा ग्लव पहनना. यू विल बी स्ट्रगलिंग टू वेयर द ग्लव. सो दिस इज व्हाट हैपेंस कि हम बच्चे हमारे बहुत ही एक ही फैमिली के बच्चे हो, मगर आपने देखा होगा अगर एक फैमिली में दो बच्चे हैं, सो दे ऑल हैव डिफरेंट ट्रेड्स. एक बच्चा धीरे बोलता है, एक बच्चा बहुत जोर से बात करता है, एक बच्चे को मीठा पसंद है, एक बच्चे को मीठा नहीं पसंद है. So the children are very different. So we cannot have one formula for every kind of a child, right? So इसके लिए we have to have. So this is what the thing is, that for every child, the parents have to take some time out and understand कि हमारा बच्चे what is the trait of our child. If you understand आपके बच्चे का personality trait क्या है, it will be very easy for you to manage the child and motivate the child. So for example, कुछ बच्चे होते हैं बहुत dominant होते हैं. So they love challenges. उनको है कि अगर मुझे कोई चीज अभी चाहिए तो अभी चाहिए. I will वो किसी भी तरह by hook or by crook उनको जो चाहिए वो लेकर मानते हैं. So these are the dominant kind of a children. और इन बच्चों की जो motivation होती है, that is power. So अगर आप ये जो डोमिनेंट बच्चे होते हैं, अगर आप इनको कोई भी सिनारियो है, तो अगर अब आप उनको ये दिखाओ कि यस, अगर इफ यू डू दिस, और वो आपको you will be more in control, you will have a lot of power. So these children are motivated to do that kind of work. So the thing is कि you have to understand the dominant trait of your child, कि क्या आपके बच्चे का क्या trait है. तो अगर बच्चा डोमिनेंट है तो उसको उस हिसाब से टैकल करिए कि you will have lot of power when you do this, or you will probably you will have a lot of control over your situations जब आप ये करोगे. So then the child will be motivated to do whatever you want the child to do.
द सेकंड थिंग इज, अगर आपका बच्चा बहुत कुछ बच्चे होते हैं, कुछ बच्चे जैसे बहुत डोसाइल होते हैं, सो दे वेरी क्वाइट, दे वेरी काम, दे वेरी सीरीन। सो जो वो वैसे बच्चे होते हैं, अगर आप उनको अगर आप उन बच्चों के साथ, अगर डोमिनेंट बच्चा है, सॉरी आपका, पहले हम डोमिनेंट ट्रेट पे बात कर रहे थे, अगर आपके बच्चा बहुत डोमिनेंट है और उस डोमिनेंट बच्चे के साथ अगर आप फियर का फॉर्मूला लगाओगे, फियर और पनिशमेंट कहोगे, कि मैं पनिश कर दूंगी, आई विल पनिश यू, तो द चाइल्ड विल बिकम डिफाइंड, ओके आप पनिश करोगे, करके देख लो, अब करके देख लो मुझे पनिश, लेट्स सी व्हाट हैपेंस। सो द चाइल्ड विल गो इनटू अ डिफाइंड मोड। सो यू कैन नॉट यूज दैट फॉर्मूला ऑफ पनिशमेंट विद द डोमिनेंट चाइल्ड। सो उस बच्चे को आप मोटिवेशन करने के लिए पावर दिखाना है, कंट्रोल दिखाना है, so then that child will settle up to what you're saying. So second, now the I was talking about, if your child is very docile and if your child is very calm and serene, so उस बच्चे के लिए, अगर आप उस बच्चे को आप अपना उसको भी फियर और पनिशमेंट दिखाते हो, तो that बच्चा will go in the shell। वो बच्चे बहुत काम और सीरीन होते हैं, एंड देन दे आर वेरी स्लो, सॉफ्ट टॉकर्स, एंड दे आर वेरी काइंड टू एवरीवन। सो अगर ऐसे बच्चे को अगर आप अपना पनिशमेंट दिखाओगे कि डू दिस और आई विल डू दिस, पनिशमेंट दिखा रहे हो, गुस्सा दिखा रहे हो, फियर दिखा रहे हो कोई काम करने के लिए, तो बच्चा और भी शेल में चला जाता है। So the child, goes back in the shell, and they become, quite scared, and they have a brain freeze that time, कि उनको गुस्सा समझ नहीं आता है। So those kind of a children, उनका जो motivation है, उनका motivation है safety and harmony, that if you show them कि yes, this is, if you do this, so you will have a lot of safety, you will have my support, if you do this, तो कोई भूचाल नहीं आने वाला है, your life will be going calm, so you can, go ahead and do some any kind of work. So if you show these people, this kind of children, you show them safety, you show them harmony, so these children will be motivated to do that kind of work. So there is one more trait of children which are analytical. Children who are very analytical, they follow order. वो हर एक चीज का उनको rules follow करना बहुत they follow rules. They are very responsible and they are very firm in what they do. So ऐसे बच्चों के साथ अगर आप वही fear और punishment का formula लगाओगे, you use the same formula with the children, so the child will counter argue with you कि क्यों, how are you saying that this can happen. So बच्चा आपके साथ counter argue करेगा, बच्चा आपके साथ और ज्यादा the child will be taking even आपके साथ बहुत ज्यादा आर्ग्यू करेगा, आपके साथ बहस करेगा, आपके साथ और लूप होल्स निकालेगा कि आपने जो बोला है उसको कैसे, बिकॉज दे हैव वेरी एनालिटिकल चिल्ड्रन। सो उनके साथ भी दिस फॉर्मूला इज नॉट गोइंग टू वर्क। सो इनके लिए जो मोटिवेशन काम करती है, इफ यू शो देम ऑर्डर कि दिस इज द थिंग, इफ यू डू दिस एवरीथिंग विल बी इन ऑर्डर, इन एन ऑर्डरली फैशन, दिस विल हाउ द थिंग्स विल हैपन, इफ यू शो देम दैट पाथ, कि talk to them like that, so then these children will be very enthusiastically, they will do whatever you ask them to do. So ये it can be used for ये जो मैंने आपको फॉर्मूले बताए, डोमिनेंट ट्रेट्स बताए हैं और उनकी मोटिवेशन बताई है, इट कैन बी यूज्ड टू फॉर देयर स्टडीज। आप स्टडीज के लिए भी बच्चों को यूज कर सकते हैं। शो देम दैट यस, इफ यू डू दिस यू विल हैव good choice of subjects, you will have good choice of college when you want to do, so the children will be happy to do that. If you for different categories of children, तो आप स्टडीज के लिए भी यूज कर सकते हैं, आप उनको डिसिप्लिन लाने के लिए भी यूज कर सकते हैं, आप उनको अपने सिबलिंग्स के साथ अच्छा बिहेवियर एक करने के लिए भी चेंज कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, आप उनको सोशली एक यू कैन यूज दिस टू behave very well socially also. So there are different scenarios in whatever you ask. You can ask them to leave the addiction to your mobile and to your social media, to Netflix. You can use these motivational words, motivational situations for every kind of a child who is particular for the particular group trait of the child. तो अगर आप एक बच्चे के डोमिनेंट ट्रेट के लिए उसकी मोटिवेशन, जो उसका की मोटिवेशन है, अगर आप उस बच्चे को वो दिखाएंगे, तो बच्चा बहुत आसानी से आपकी हर बात मान जाएगा, और ये आप किसी भी सिचुएशन में यूज कर सकते हैं। सिर्फ फियर दिखाना या सिर्फ ब्राइब करना बच्चे को, वो एक बहुत ही जनरल है, बहुत पुराने टाइम से चलता आ रहा है कि एंड देन द चिल्ड्रन, दे डू नॉट लिसन टू यू, the defiant children, the dominant children will become defiant,
The docile children will become even more, they will go into the shell, they will get scared with you. The analytical children will start arguing with you. And then there are one more, if the children are very social, that is also one trait of the children, कि अगर आपके बच्चे बहुत ज्यादा सोशल होते हैं, सो दीज चिल्ड्रन लव टू टॉक, दे लव टू टॉक, बहुत बातें करते हैं, दे लव टू मेक लॉट ऑफ फ्रेंड्स विद एवरीवन, दे लव टू entertain people, they love to have fun, and they love creativity. So अगर ऐसे बच्चों को अगर आपने मोटिवेशन देना है, तो उनके लिए मोटिवेशन होगा फन एंड क्रिएटिविटी एंड कनेक्शन विद अदर्स. So if you tell them, कि do it in such a way that it is fun for everyone around, so उनका दिमाग उस तरह से चलना शुरू करेगा, they will love to do it. वो हर तरह से अपनी एनर्जी उस चीज में डालेंगे, to make it more entertaining and to make it more fun for the people. Am I not visible? Facebook page is showing. I think Insta is going fine, but suddenly I see the Facebook that the video is not playing. Is it? Is the video not showing on Facebook? Can someone, message and let me know? So Instagram, I think we are stuck at Facebook. So there is some technical issue. I can see my video is not playing. So just give me 2 minutes. I'll try to correct that. Somehow my video is not playing. Anybody who's on Facebook Live can confirm to me if my video is playing or not. Okay, so I think let's continue with the Insta Live. I have no idea why the video is not playing here. Right. So I think we will continue with the Insta. So yes, we were talking about कि these are the secrets कि आप बच्चों को कैसे मोटिवेट कर सकते हैं. So different different बच्चे हैं, अलग अलग तरह के बच्चे हैं, और हर बच्चे की अपनी अलग एक मोटिवेशन की चाबी आप बोल सकते हैं. That is the key to their motivation. So अगर आप you take out some time, और अगर आप समझें कि आपका बच्चा किस कैटेगरी में है, आपके बच्चे की डोमिनेंट ट्रेट क्या है, आपका बच्चा उसकी पर्सनालिटी का ट्रेट क्या है, अगर आप ये समझ सके और उसके हिसाब से अगर आप अपने बच्चे को मोटिवेट करें किसी भी चीज के लिए, सो देन इट विल बी मच बेटर. रिजल्ट भी आपको बहुत अच्छा मिलेगा, और आपका जो एनर्जी और एफर्ट लगेगा वो भी बहुत कम लगेगा, बिकॉज देन द चिल्ड्रन विल बी वेरी हैप्पीली डूइंग व्हाट यू वांट देम टू डू. So instead of using the same one formula for everyone, and that is not going to work. So हमें अपना we have to change manipulation. जो हम मैनिपुलेट करते हैं बच्चों को डांट से या ब्राइब करके या पनिशमेंट से, सो हमें मैनिपुलेशन को चेंज करके मोटिवेशन में चेंज करना है. मैनिपुलेशन बंद करना है और मोटिवेशन शुरू करना है. सो इफ वी डू दैट वे,
So we will be more in touch with our children. We will be more happily working gelling with our children, and the work children in turn will be very happily and very they will do the things that we ask them to do in a very much better and effective way. So agar any questions, if anyone has any questions, आप कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, इफ यू वांट टू आस्क एनी क्वेश्चंस रिगार्डिंग दिस, क्या होता है, दिस इज व्हाट आई वांटेड टू टॉक टू यू अबाउट, द सीक्रेट टू मोटिवेटिंग योर चिल्ड्रन. सो आई हैव टोल्ड यू कि बच्चों की मोटिवेशन की सीक्रेट चाबी क्या होती है. So if anybody would like to ask me any question, any I can see many people there on Instagram. So if you anyone you would be interested to. Can I see any questions? Any questions regarding this, or anything else regarding? Right. So I think if there are no more questions, there are no questions from Facebook. Is some technical issue and the Facebook is stuck for some reason, and Instagram, I think yes. If you're not having any questions, then I would like to end the live here. See you in the next live session. And if you have any topic that you would like me to take, please let me know. And next live में I will take up that topic. आपके लिए anything with parenting that you are you want me to take up, I will take up that topic, and we will do the next live on that. Thank you. See you. And the next live will also be on Friday. Every Friday, I'm planning to do some lives and take up one issue every week. Take up one issue which the parents are facing, and if I can, talk it out with you all. So that will be much better. So thank you so much. Thank you for joining, and I would like to end the live here.